Good evening. Hope you all are fine. तो पिछले वीडियो में हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स किया और उससे पहले डॉट प्रोडक्ट। अब कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल करते हैं उस पे। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं जिसमें लेट्स से कि वी हैव अ गिवन न्यूमेरिकल इन दैट हमें बोला जा रहा है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो फिर हमें बोला गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, राइट। तो अगर हम सोचें हाउ टू गो अबाउट इट, हम जानते हैं कि एंगल पूछ रहा हमसे। तो इफ यू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a डॉट b, we write ab cos theta, which means cos theta can be vector a dot vector b divided by mod of a into mod of b। बस यही करना है हमें। तो अगर हम पहले a डॉट b फाइंड करें तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, दिस एंड दिस। हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, i डॉट i विल बी 1, सो एंड हियर इट इज माइनस साइन, सो -1। बाकी i डॉट j एंड k तो 0 हो जाएगी, सो नीड नॉट टू राइट 2j एंड j। तो j 1 मीन्स +2 हो गई। ऐसे ही -k मीन्स 1 एंड -2 प्लस ये हो गई हमारी 2, मतलब कितने हो गई ये 5। तो a डॉट b हमारी हो गई, दिस इज माइनस ना, सो इट इज 3। 2 + 2 4, -1 is 3। Now let's find mod of the vectors। तो अगर हम mod फाइंड करें तो mod of a it will be 1 square plus 2 square plus -1 square whole under root। So we get 1, 2 2 is 4 and this is also 1, so 4 plus 2 is 6 under root। ऐसे ही mod of b it will be -1 square plus 1 square -2 square whole under root। So we get 1 plus 1 and actually it will be this plus, so -2 square, which means 2 2 is 4, so +6 whole under root।
So it will be root 8. These two are 1 and 2 to the, sorry, 2 to the 4 now. So root 6. Now place this value, which means cos theta a dot b. So a dot b vector we have found, which is 3. So 3 upon a and b, both are root 6. So root 6 into root 6. Root 6 into root 6 is 6. So we get 1 by 2. Therefore theta would be how much? I think 60 degree. Thus we get angle between the vectors, which is 60 degree. Similarly, if you do next question. Now let's say हमें बोला कि if we have two vectors, one it is A and A is given by I cap plus 2j cap plus 3k cap and vector B is equal to 2i cap minus j cap, और फिर बोला कि प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर. इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? इफ यू कैन टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, हम जानते हैं i डॉट j इज ऑलवेज 0. सो लेट अस टेक a dot b. The a dot b would be, if it is 0, then they are perpendicular. So I dot I is 1, so we are left with 2. J dot j is 1, so minus 2. And k is missing in third, it means 0. Something multiplied by 0 gives us 0. And here 2 minus 2 is 0. So the A is perpendicular to B. Thus A and B vectors are perpendicular to each other. हमने प्रूव कर दिया इसको. ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो व्हाट कुड बी दैट? फर्स्ट लेट अस रिमूव दिस. Now question is, if we have two vectors, A is equal to 2i cap plus lambda j plus k cap and B is equal to 4i cap minus 2j cap minus 2k cap, तो हमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो लैम्डा क्या हो सकती है, हम ये करें. And condition is when these two vectors are perpendicular to each other. तो ऑलरेडी गिवन है कि A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B. तो परपेंडिकुलर कब होती है? अभी अभी हमने किया कि डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0.
So let's take dot product of these two vectors. So A dot B. Now 4i into 2i means it is 8. Then minus 2 into lambda. It will be minus 2 lambda. Minus 2 and 1. So minus 2. And perpendicular means they must be 0. Which means this is 8 and minus 2. So we are having 6. Minus 2 lambda is 0. So we can have 2 lambda as 6. Therefore, lambda is equal to 6 by 2. And thus we get 3. So lambda की value कितनी हो गई? 3. Now let us take something little different. Hope you are getting it. Question is, if force is given by 6i cap plus 4k cap Newton, which acts on a body such that it produces velocity of 2i cap plus 4k cap मीटर पर सेकेंड. तो हमें कह रहा है कि फाइंड पावर applied in this process. So simple, we write like this. Since power is force into velocity, force and velocity are vector, so dot product of these two vector is power, which is a scalar quantity. Now dot product, first this I cap, so 6 to the 12, and if you do 6 with 4k cap, so 0, so need not do this I with 4k cap 0, so directly 4k cap and 4k cap, it will give 16. So power becomes 28 watt. Always will be using the SI unit. So this way we can try some numericals. We'll do more numericals in next video. Hope I am able to make your work easier. थोड़ा मैं आपको help कर पाता हूँ. And so I request you to write your comment, give your feedback. Don't forget to hit like button, subscribe it, share it with your friends. Thank you so much. May God bless you.